Hello, my dear students. So, today we are going to start a very important chapter, and that is gravitation. This chapter is very important for class 11th. It's very important for NEET, for JEE mains. Okay, one more thing I will tell you, and that is if you are done with the gravitation, अगर आपने gravitation अच्छे से पढ़ा है, that means almost 60% or 70% of the electrostatics is also done, because they are highly connected. Okay, so gravitation. तो सबसे पहले मैंने एक काम किया है, I have written down here all the topics in the gravitation. Topic number first is Newton's law of gravitation. Topic number second is superposition principle. Topic number third is acceleration due to gravity. Topic number 4 is gravitational field. Topic number 5 is gravitational potential and potential energy. Topic number 6 is satellites. And topic number 7 is Kepler's laws of planetary motion. Okay. So let's start with the topic number 1, that is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Okay, this is the topic number first of gravitation. Okay, I'll start from the scratch. Doesn't make any difference whether you have gone through this chapter or not. ठीक है ना, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, so that every student will get it absolutely. Okay, तो सबसे पहले जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, it gives gravitational force between two masses at rest, between 2 point masses at rest. Okay, so these are 2 point masses, mass m1 and mass m2. Okay, and it is analogous to Coulomb's law. वो भी clear हो जाएगा with time. Now we have two masses, m1 and m2 are the two masses. Now what is the statement of the Newton's law of gravitation? इसका statement क्या है? Okay, so the statement is simply like this, that any two bodies in this universe, they attract each other by force F, like these two bodies. They attract each other by force F, and that force F is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to square of the distance. Okay, so that means this F is directly proportional to m1 into m2, and this F is inversely proportional to square of the distance between the two masses. We have two statements here. First is that F is directly proportional to m1 m2, and the second statement is that the F is inversely proportional to r square. Now what does that exactly mean? That means अगर आप इस m1 और m2 का मास इंक्रीज करेंगे, सपोज यू विल इंक्रीज द मास ऑफ m1 and m2, the gravitational force between those two masses, that will also increase. Simply, for example, we will double m1, will double m2, the force will become 2 into 2 is 4 times. Okay, and it is inversely proportional to square of distance. Now what does that mean? That means if we increase the value of this r, ठीक है ना, the force F will decrease. If we double the distance r, if we double it, the force will not become half, it will become 1/4 of the initial force. Okay, if we suppose triple the distance r, this force will become F divided by 3 square is 9. Okay, so I am sure that आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा what this inversely proportional to r square means. अब next हम क्या काम करने जा रहे हैं? I am going to combine these two equations, this equation and this equation. Let me combine these two equations.
हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी बनेगी, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, आई विल राइट लाइक दिस, F इज इक्वल टू यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज G, m1 into m2 divided by r square. So this equation is what we call as the Newton's law of gravitation. This equation is famously known as Newton's law of gravitation. So this equation is what we call as Newton's law of gravitation. Okay, let me write down this is equation number first. This equation is what we call as Newton's law of gravitation. All right, so here I am writing it. It is NLG. NLG means Newton's law of gravitation. Okay, now you should know what is this G. What is this G? This G is famously known as universal gravitational constant. This is famously known as universal gravitational constant. Now why the name universal? Universal का मतलब क्या है? Universal means that if there are any two bodies in the universe, the value of the gravitational constant, this G, will remain same. Okay, that means the value of G is same for Earth, it is same for Mars, it is same on the Sun, it is same on the Saturn, so on and so forth. Okay, that's why it's called as universal gravitational constant. What is the value of this G? The value of this G is very small, equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the value of this G. Important value. That's why I have highlighted it. 6.67 10 to the power minus 11 is the value of this G. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, it's also equal to 0.1234567 Newton meter square per kg square. This is the value of the G. Okay, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा G? So that you will have a feel कि इसका वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू 1. Its value is very small compared to 1. This G is very small compared to 1. Now what does that mean? G is very small. इसका मतलब ये है that gravitational force is a very weak force, or we can say out of 4 fundamental forces, gravitational force is the weakest force in nature. It's the weakest force in nature. Okay, that is obvious from the value of the G. और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. Dimensional formula of gravitational constant. You should know this. Okay, you should know this. ठीक है, now what is the dimensional formula of Newton? That is m1 l1 t minus 2 मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा L2, फिर kg minus 2, so it is m minus 2. This is the dimensional formula of G. Let me rewrite it like this. This here m1 minus 2 is minus 1, L1 plus 2 is 3, t minus 2. This is the dimensional formula of the gravitational constant. So my dear students, till now
I think it is clear that what is Newton's law of gravitation. तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट, दैट इज F is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance. Combining these two equations, we have this equation. फिर यहाँ पे हमने एक constant of proportionality introduce किया G, which is called as universal gravitational constant. This is the value of this G, which is very very important value. And then मैंने यहाँ पे लिखा कि G का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. देन वी विल डू द क्वेश्चंस ऑन दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सम PYQs एज वेल. तो नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इज दैट इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. There are how many fundamental forces? There are 4 fundamental forces. The weakest among them is the gravitational force. Next there is weak nuclear force. Then stronger than this is what we call as electromagnetic force. The strongest force in nature is what you call as strong nuclear force. Strong nuclear force. Strong nuclear force. All right. So this is the increasing order of these forces. ठीक है. And gravitational force, you know that it is always attractive in nature. It cannot be repulsive. It's always attractive. Two massive bodies always attract each other. Next, it is medium independent force. What does that mean? That means if you will change the medium between two bodies, the gravitational force will remain same. It will not change at all. It is a central force. अब इस central force का मतलब क्या है? It means that जो gravitational force है. Okay, so this is a central force. Gravitational force is a central force. Now what does that mean? That means कि अगर हमारे पास 2 bodies हैं, we have 2 bodies. This is one body of mass m1. This is one body of mass m1, and this is another body of mass m2. ठीक है जी. Now let's draw a line which joins the centers of these two masses. तो जो gravitational force है, it is directed along the line joining the centers of these two masses. That is what we mean by saying that it is a central force. तो central force का मतलब ये है that central force means that the gravitational force is directed along the line joining the centers of the two masses. Okay. Next important property is that it's a conservative force, which we'll discuss later on in detail. Next important property is that it obeys Newton's third law of motion. Newton's third law means that अगर m1 पे force है 10 Newton, then the force on m2 is also equal to 10 Newton. To every action there's an equal and opposite reaction. नेक्स्ट इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. वन मोर प्रॉपर्टी इज दैट इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. एंड देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब है Earth and Sun are millions of kilometers apart, still they attract each other by a force, and that force is called as gravitational force. So I'm sure that all these properties are crystal clear to you. Weakest force
always attractive, it's a medium independent force, it's a central force, it is a conservative force, it obeys Newton's third law, it obeys inverse square law, which implies F is proportional 1 by r square, it obeys superposition principle, and it is a long range force. Okay, let's move ahead. तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज एग्जांपल्स ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एग्जांपल नंबर 1 कुछ ये है दैट दीज आर टू पार्टिकल्स. यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं? यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं. वी हैव 2 पार्टिकल्स हियर. ओके, पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड पार्टिकल ऑफ मास m2. m1 and m2, there are 2 particles. ठीक है जी. अब क्वेश्चन ये है that m1 and m2 are doubled. m1 and m2 are doubled, and or the separation between them that is increased 3 times. What will happen to the force? Gravitational force जो इनके दरमियान है, will that increase or will that decrease? If it increases or decreases, how many times? That is the question. Okay, so first and foremost, they will attract each other by a force. That force is equal to F. ठीक है जी. Now it is given that this M1 is doubled. M1 is doubled. So I will write down here new force F dash will be equal to M1 is doubled. So it will be 2 times increased into M2 is also doubled because this F is equal to G m1 into m2 divided by r square. m1 is doubled, so obviously it will be 2 times. The force will increase 2 times. m2 is doubled, so again multiplied by 2 divided by r is tripled. So in the denominator मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 square multiplied by F. What is this F? F is the initial force between m1 and m2. 2 into 2 is equal to 4 divided by 3 square is 9 into F. So this is the answer to this question. That is, the force is changed 4 by 9 times. It is changed 4 by 9 times. The new force will become 4 by 9 times the initial force. So obviously it decreases. Next question देख लीजिए आप. बेसिक क्वेश्चन है फिर से. एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, इफ द मीडियम बिटवीन 2 masses is changed, what will happen to the gravitational force? Will it increase, will it decrease, or will it remain same? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, लेट मी राइट डाउन हियर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स Fg remains same. It is not going to change. Now why it remains same? Because gravitational force Fg is a medium independent force. Is a medium independent force. Medium independent force means that if you will change the medium between the 2 masses, the gravitational force is not going to change, that will remain same. Or we can say that the gravitational force in vacuum F0 is equal to gravitational force in any medium. Okay, important equation. F0 is equal to Fm. Unlike an electrostatic force, जो electrostatic force होता है that is medium dependent force, but the gravitational force is a medium independent force. Okay, question एक यहाँ पे है, has been asked in NEET 2017. The question is like this: two astronauts are floating in gravitational free space. After having lost contact with their spaceship, the two will: option A, move away from each other, become stationary, keep floating at the same distance, move towards each other.
इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी, ये हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट है, दिस इज वन एस्ट्रोनॉट, फॉर एग्जाम्पल एम, सपोज इट्स मास इज m1. This is another astronaut whose mass is m2. Now they are in gravity free space. That means there is no external gravitational force on these two bodies. Now obviously, see, have a look, concentrate on this. There will be gravitational force between these two masses. तो इस पे फोर्स पड़ेगा F1, इस पे फोर्स पड़ेगा F2. Because of this force, these two bodies, these two astronauts, they will accelerate towards each other. So the answer to this question is simply they will move towards each other. They'll simply move towards each other. Okay? Let's switch to another question. This is another important example. Very, very important example. Okay? This question will be again repeated in electrostatics later on. And the answers will be exactly same without any difference. Okay? The question is like this. हमारे पास यहाँ पे दो bodies हैं. This is body A whose mass is m. This another object whose mass is also equal to m. Now these two objects attract each other by a force which is equal to F. Which is equal to F. सही है? अब क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है if 25% of mass is transferred from A to B, 25% of mass is subtracted from A and added to the B. Calculate new force between the two bodies. You are supposed to calculate what the new force. तो इसमें there are three parts, 25%, 20% and 50%. सबसे पहले इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि 100% इज इक्वल टू 1. यस और नो? ठीक है जी. 50% इज इक्वल टू 50/100 विच इज 1/2. सही है ना? इसी तरह से 25% जो है दैट इज 1/4. 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100, सो इट कम्स आउट बी 1/4. 20% मीन्स 20/100 विच इज 1/5. सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए आपको. ठीक है जी. अब क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है दैट 25% ऑफ द मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी. तो इसका मतलब ये है दैट 1/4 ऑफ मास इज सब्ट्रैक्टेड. 1/4 ऑफ मास इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बॉडी ए. तो m1 और मास ऑफ बॉडी ए will become m minus m/4. Okay, let's solve this. 4 into 1 is 4 minus 1 is 3. तो ये बनेगा 3m/4 will be the new mass of the body A. Body B will have a mass of m plus m/4 because this m/4 is subtracted from A and added to B. तो ये नया मास इसका बनेगा 5 times m/4. ठीक है जी. So that means the new force F dash will be equal to G into mass of A which is 3m/4 into mass of B which is 5m/4 divided by the distance will remain same, that is r square. Okay. Now here we have a simple calculation. 3 into 5 is 15. 4 into 4 is 16. Multiplied by G into m square divided by r square. Alright. Now what is this gm square by r square? This gm square by r square is the initial force before transferring the mass. ठीक है. Let me write down here. ये जो F है, it is equal to gm into m is m square divided by r square. क्योंकि mass है m and the distance between them, let's take that as r. Separation between these two bodies is r. Okay. तो यहां मैं क्या करने जा रहा हूं? I will write it like this. It is equal to 15 divided by 16
into F. So this is the answer to this question. Okay, exactly in the same way आई एम श्योर दैट आप ये बी पार्ट और सी पार्ट इसमें कर सकते हैं. दिस बी पार्ट 20% and 50%. Okay, there is a shortcut method for this as well. तो shortcut method कुछ ऐसे हैं. I will write it like this. F dash is equal to G divided by R square, or like this. Wait a minute. I'll simply write it like this. Let me simplify it. F dash equals to 1 minus 1 by 4. 1 by 4 is 25%. Into 1 plus 1 by 4. Because 25% is subtracted from A and added to the B. So 1 minus 1 by 4 into 1 plus 1 by 4 multiplied by the initial force. 1 minus 1 by 4 comes out to be 3 by 4. Into 1 plus 1 by 4 comes out to be 5 by 4 into F. So the answer is simply 3 into 5 is 15, 4 into 4 is 16 multiplied by F. Okay. B part is that 20% of the mass. Have a look. 20% of the mass is transferred from A to B. And we have to calculate what will be the new force between the two bodies once the mass is redistributed. Once the mass is subtracted from A and added to the B. You know that 50% is equal to, is it 50% or 20%? It is 20%, sorry. It is 20%. So that means 20% is equal to 1 by 5. Now how can we do it? How can we easily calculate the new force? It is 1 minus 1 by 5 into 1 plus 1 by 5 into F. ठीक है जी. Okay, now 1 minus 1 by 5 किसके बराबर होगा? 5 1 are 5 minus 1 is 4, so it will be 4 divided by 5 into 5 1s are 5 plus 1 is 6 divided by 5, 4 6 24 divided by 25 into F. So this is the new force between the two bodies. Okay, ठीक है जी. So 50% will stay as home assigned for you. I am sure you can do that. Okay, this 25% जो हमने A part किया है, in fact it has been asked in NEET, that in electrostatics. This question has been asked in electrostatics. Okay, electrostatics in NEET. Question ये है that 25% of the charges transferred from body A to body B. Calculate the new force. The procedure is exactly same and the answer will be also same. Let's switch to another question. देख ले बेटा, ये जो question है, again it is important for both. It's important in gravitation plus electrostatics. कभी कभी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हैं, दे आर लाइक ट्विन सिस्टर्स, बिकॉज सो मेनी कॉन्सेप्ट्स विल बी रिपीटेड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, ग्रेविटेशन मेक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रॉन्गर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन टर्न मेक्स ग्रेविटेशन स्ट्रॉन्गर. तो देख ले बेटा क्वेश्चन है क्या. क्वेश्चन ये है, पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसके हमने दो हिस्से किए. One part has a mass small m and another part has a mass capital M minus small m. What is the ratio small m is to capital M for the force, so that the force between the fragments becomes maximum. Okay, so how to do this question? देख ले बेटा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये हमारे पास है कि एक पार्टिकल हमारे पास है जिसका मास है कैपिटल M. इट इज गिवन टू यू. Now it is broken down into two pieces, and those two pieces are separated by some distance. This here one piece, mass of this one piece is small m. This is another piece, mass of this is capital M minus small m. Now these two fragments are separated by some distance,
दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r। ठीक है जी। नाउ ऑब्वियसली ये जो दो पार्टिकल्स हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज f, isn't it? क्योंकि इसका भी मास है, इस पार्टिकल का मास है, इस पार्टिकल का मास है, सो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ f। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द स्मॉल m इज टू कैपिटल M so that the force becomes maximum। Okay, so one way of doing is by differentiation. Another way, I will simply directly write down that this important point, that is f becomes maximum, f becomes maximum if this capital M is equally divided into two fragments, अच्छा इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जो ये कैपिटल M है इट इज इक्वल टू 10 kg। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू फ्रैगमेंट्स। तो मैं ये बोल रहा हूं द फोर्स विल बिकम मैक्सिमम बिटवीन द टू फ्रैगमेंट्स if this 10 kg is equally divided into 5 kg and 5 kg। Okay, so in that very case, what will be the ratio of the small m is to capital M? Obviously small m is to capital M will be equal to 5 is to 10, 5 ones are 5, 5 twos are 10, तो ये आएगा जी 1 is to 2। And if we want to calculate capital M is to small m, the answer will be 2 is to 1, isn't it? और अगर यही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा जाएगा वहां पे, so let me write down here, in electrostatics the answer to this question will be small q is to capital Q is equal to 1 is to 2, and capital Q is to small q is equal to 2 is to 1। This will be 2 is to 1 in electrostatics। Okay, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा सर आपने कहां से लाया दैट द फोर्स विल बिकम मैक्सिमम if the capital M is equally divided into two fragments। तो देख ले बेटा let me explain this with the help of an example। देख ले, let me write down here small m, m1 and this another particle m2। अच्छा m1 m2 क्या है? This particle is particle number 1 whose mass m1, this is second particle whose mass is m2। ओके, तो ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है that the mass of this m1 is 1 kg and the mass of this is 9 kg because the total mass is 10 kg। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है m1 is 2 kg, m2 is 8। तीसरी पॉसिबिलिटी है 3 kg है, this is 7 kg, this is 4 kg, this is 6 kg, this is 5 kg, this is 5 kg। okay, then you know one thing, that is f is directly proportional to m1 m2। तो इसका मतलब ये है m1 m2 जितना ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। सही है ना? तो आप मुझे बताइए इस केस में what will be this m1 into m2 equal, that will be 1 into 9 is 9। in this case m1 m2 comes out to be 2 into 8 is 16। in this case m1 m2 comes out to be 3 into 7 21। आप देख लो this m1 m2 keeps on increasing। 4 into 6 is 24, 5 into 5 comes out to be 25। okay, अब आप देख लें which value is maximum, which value of m1 m2 is maximum, that is this 25। so when this value is maximum
then it implies that the force will be maximum. Force तब maximum होगा when the particle 10 kg is equally divided amongst the two masses. Okay, 5 kg and 5 kg. ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन हुआ. दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी है इसका, दैट इज बाय डिफरेंशिएशन. देख लें आप, दैट इज बाय डिफरेंशिएशन. ओके, दैट इज समथिंग लाइक दिस. देख लें बेटा, दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका. F जो है दैट इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 विच इज स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सही है ना, क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल का जो मास है दैट इज इक्वल टू स्मॉल m, और दूसरा पार्टिकल जो है इसका मास क्या है, इसका मास है दैट इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m. दूसरा पार्टिकल जो हमारे पास है दैट इज कैपिटल M माइनस स्मॉल m. डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू r, so the force will be like this. Now the force will become maximum if this term, that is small m into capital M minus small m, is maximum. Now let's try to maximize this. Maximizing small m into capital M minus small m. वो कैसे? By differentiating it with respect to small m. This can be written like this. ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, small m capital M minus m into m is m square. सही है ना? तो इसी का हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, small m capital M minus m square. Put it equal to 0. Because whenever a function is maximum, has maximum or minimum, first differentiation becomes equal to 0. तो इसका डिफरेंशिएशन, स्मॉल m का डिफरेंशिएशन जो आएगा दैट विल बी 1, सो दिस इज कैपिटल M माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ m स्क्वायर इज ट्वाइस m इक्वल टू 0, which means capital M is equal to 2 times small m, which means that 1 by 2 is equal to small m divided by capital M, or which means small m is to capital M, जो ये रेशो बनेगा it will be 1:2. This is what I was saying. Okay, the ratio of the two fragments is small m is to capital M is 1:2. So we are done with this important question, which has been asked a few times in electrostatics. तब जाके मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें बेटा. इट इज बेस्ड ऑन द सेम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि पार्टिकल एक है whose mass is 4 kg. This question has been exactly repeated in electrostatics, in chapter electrostatics, and this question has been asked in JEE Main 2024, if I am not wrong. Either it will be 2024 or 2025. But this question has been asked, I am sure about that. Okay, तो ये जो पार्टिकल है इसका मास क्या है, that is 4 kg, is divided into two parts for the force between the fragments to be maximum, which is important here. The masses of the two fragments should be. अभी मैंने important point लिखाया that the force will become maximum only if this capital M is equally divided into two fragments. तो इसका मतलब जो 4 kg है it should be equally divided into 2 kg, should be the mass of one fragment, and 2 kg should be the mass of another fragment. ठीक है जी. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे ये था 4 kg की जगह वहां पे है 4 माइक्रोकूलम, एंड द आंसर इज ऑब्वियसली 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम. लेकिन यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 2 kg एंड 2 kg, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन JEE Main 2023. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. ठीक है, ओके, तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए, तो वी आर लेफ्ट विद 20 मिनट्स बिकॉज एक घंटे का ये लेक्चर होगा. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m, 2 पार्टिकल्स हैं जिनका मास है स्मॉल m, मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, रेडियस भी दिया गया है,
अंडर एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात हो रही है बेटा। सर्कुलर मोशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो देयर इज अ फोर्स व्हाट वी कॉल ए सेंट्रीपिटल फोर्स। इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, वो तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, लेट्स मेक दिस डायग्राम हियर। लेट मी मेक दिस डायग्राम, ठीक है जी। तो इस डायग्राम में हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल्स हैं। दिस इज 1 पार्टिकल, दिस इज अनदर पार्टिकल, ठीक है जी। इस पार्टिकल का मास है m and mass of this particle is m. This is the center of the circle, point O. All right. तो फिर ये दिया गया है कि radius of the circle is equal to r. Let me write down here that it is equal to r. Now obviously they will attract each other. इस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, that will be F. इस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, that will be F. They will have a mutual gravitational force. Now see that ये जो gravitational force है, it is directed towards center of the circle. It is directed towards center of the circle. This force is directed towards center. This force also directed towards center. Hence, this gravitational force will provide necessary centripetal force. It will provide necessary centripetal force. और हमें calculate क्या करना है? We have to calculate the speed of each particle. एक particle की speed हमें calculate करनी है. Let us try to do that. तो ये पार्टिकल जो है, इट विल मूव अलोंग दिस पार्टिकल विल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, सो द वेलोसिटी विल बी ऑब्वियसली टेंजेंशियल, दिस इज v, एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी आल्सो टेंजेंशियल, तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, दिस विल बी v, ठीक है। ओके, सो द इक्वेशन आई विल राइट डाउन विल बी सिंपली हियर, that will be the electrostatic force will provide gravitational force. I'm obsessed with electrostatics. Gravitational force will provide necessary centripetal force. तो जो gravitational force है किसके बराबर होता है? Gm into m is m² divided by r² is the gravitational force is equal to, wait a minute, sorry. यहाँ पे जो force आएगा that will not be equal to r², यहाँ पे sorry distance will not be r², rather that will be 2r whole square, because the distance between the two particles is r plus r, which is 2r. Centripetal force comes out to be mv² divided by radius of the circle is r. 1r and 1r is going to cancel, we are left with this, and m will also cancel. So gm divided by 2² is 4 into r is equal to v². सही है ना? Okay, simply this 1m and 1m will cancel, this r and 1r is going to cancel. So we are left with this, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी फाइनली आ जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ gm/4r. Okay, so I am sure that this question is absolutely clear to you. तो वेलोसिटी आ जाएगी। जरा देखें क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन है, दैट इज डी पार्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस अनदर क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन JEE Main 2023. So the next question is that two identical particles, each of mass m, they move in a circular path. जिसका रेडियस दिया गया, that's a. Under the action of their mutual gravitational attraction, we have to calculate angular speed. Okay, so let's try to do this. Okay, तो सबसे पहले this is circular path, there are two particles, इसमें 2 particles हैं और दोनों particles का mass same है। दिस here one particle, इसका मास है m, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज रेडियस r, रेडियस a इज गिवन, और इसका रेडियस है, सो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज a, ठीक है।
अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। ओके, तो इनके दरमियान एक फोर्स होगा दैट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। That gravitational force will provide necessary centripetal force because of which these particles are moving in the circular path like this. Gravitational force किसके बराबर होता है? It is gm into m is m square divided by distance between the two particles is twice a whole square is equal to centripetal force. Centripetal force की दो इक्वेशंस होती हैं। एक इक्वेशन तो आपको पता है दैट इज mv स्क्वायर बाई r, और दूसरी इक्वेशन है बेटा दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। आई विल राइट डाउन दैट इक्वेशन, एम आर के बदले ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है या तो ये इसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या होगा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है उसी हिसाब से हम इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देख लें आप, दिस m एंड दिस m विल कैंसल एंड फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसे, g इंटू एम डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम हियर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू g इंटू एम डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इंटू a इज a क्यूब। ठीक है जी, तो फाइनली ओमेगा निकला, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई 4a क्यूब। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Now let's have a look at the options. That is gm divided by 4a cube. Gm divided by 4a cube is one option. So this is the correct answer to this question. Gm divided by 4a cube. C part. ठीक है जी. So we are done with Newton's law of gravitation, and we have done all the types of questions on Newton's law of gravitation. So I hope that the topic number first is crystal clear to you. Topic number second है बेटा, that is superposition principle. Superposition principle, ठीक है जी. First of all, let's try to understand कि हम superposition principle क्यों पढ़ते हैं. Why? What is the need for the superposition principle? मान लो हमारे पास दो पार्टिकल्स है, ठीक है जी. तो ये हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये हमारे पास दूसरा पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास है m2, इनके दरमियान जो सेपरेशन दैट्स इक्वल टू r. Now obviously we can calculate the force between these two particles. वो तो हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. वो फोर्स किसके बराबर होता है, वो होता है g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. ओके, सो दिस इज ए टू पार्टिकल सिस्टम. ये सिस्टम जो है ये हमारे पास, दिस इज ए टू पार्टिकल सिस्टम. हमने फोर्स कैलकुलेट किया, फोर्स किसके बराबर है, g m1 m2 बाई r स्क्वायर. ओके ओके, अब ये भी पॉसिबिलिटी है बेटा, यहाँ पे ध्यान रख ले. कॉन्सेंट्रेट हियर ऑल ऑफ यू, आई वांट ऑल ऑफ यू टू कॉन्सेंट्रेट हियर. एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, मान लो दैट इज कैपिटल एम. ठीक है, यहाँ पे और एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, यहाँ पे और एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, यहाँ पे और एक पार्टिकल है जिसका मास है m3. ठीक है, now the question is calculate net force on capital M. जो बीच में यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है. तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी फोर्स आर देयर ऑन दिस कैपिटल एम. ऑब्वियसली जो ये कैपिटल एम है इस पे कितने फोर्स होंगे, तीन फोर्स होंगे. ड्यू टू m1 द फोर्स विल बी f1. ओके, due to m2 the force will be f2, and due to m3 the force will be f3 like this. ठीक है जी.
तो कितने फोर्स हैं इस पे? 3 फोर्स हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर वेक्टर्स। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें इस पार्टिकल पर नेट फोर्स निकालना है। तो अगर नेट फोर्स निकालना है, सो ऑब्वियसली द नेट फोर्स ऑन दिस particle will be equal to the vector sum of the forces, that is F1 plus F2 plus F3 plus so on, depending on how many particles are there. ठीक है जी? Now this equation is what you call as the superposition principle. इस equation को हम नाम देते हैं, this is called as superposition principle. तो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है that the net force on this particle due to n particles is equal to the vector sum of the forces. That's what you call a superposition principle. ठीक है जी? तो हम ये कह सकते हैं, we can say like this, that the superposition principle is it is equivalent to n times Newton's law of gravitation. N times Newton's law of gravitation plus vector sum of forces. That is what you call a superposition principle. Okay, I hope that it is crystal clear to you. तो यहाँ पे मैंने इसका statement लिखा है. The statement is like this, that the net force on a particle due to n particles is equal to vector sum of the forces on that particle due to the n particles. Okay, is that clear or not? ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब इसमें जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, सो विल बी यूजिंग द वेक्टर एडिशन, पर्टिकुलरली द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा वेक्टर एडिशन, दैट इज ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ. याद होगा आपको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दे आर इक्विवेलेंट, दे आर सेम. इट इज यूज्ड टू ऐड हाउ मेनी वेक्टर्स? 2 वेक्टर्स. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 वेक्टर्स हमारे पास हैं. दिस वन वेक्टर दैट्स वेक्टर ए, फिर यहाँ पे और एक वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स विच इज आर. और ये रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन दैट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos. ठीक है, एंड दिस बीटा गिव्स डायरेक्शन ऑफ आर. ये वेक्टर, ये एंगल जो है, इट गिव्स direction of the resultant vector, and it is given by this equation that tan beta is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. ये हमारे पास जो इक्वेशन है, this equation gives us what? It gives us the direction of the resultant vector, this equation. okay, ठीक है जी. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है. ठीक, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कॉन्सेंट्रेट हियर. तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए बेटा. तो एक स्पेशल केस हमारे पास ये है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं विच आर इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस. तो ये मान लो वेक्टर ए, ये मान लो वेक्टर बी. सो सिंस दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है 20 न्यूटन, B है 10 न्यूटन in the same direction, the resultant force will be what? It will be 20 न्यूटन plus 10 न्यूटन which is equal to what? It is equal to 30 न्यूटन. ठीक है जी. इसी तरह मान ले बेटा आप, अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं which are opposite to each other. For example, one vector is towards right which is A, and another vector is towards left which is B. So are they in the same direction, opposite direction? Obviously opposite direction. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा a minus b. किसके बराबर? a minus b. That's the subtraction of the 2 vectors will be the resultant of these 2 vectors. ठीक है. Number third, there's one more special case, that is if there are 2 vectors which are mutually perpendicular. Like ये हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर a, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है which is वेक्टर b. So the resultant will be along this direction. इस दिशा में इनका resultant होगा, and this resultant will be obviously equal to what? It will be equal to
it will be equal to square root of a square plus b square. This gives the resultant of two mutually perpendicular vectors. अभी a square plus b square कहाँ से आ गया? सिंपली देख लें आप, यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है r, this equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Now in this special case, this angle theta is equal to 90 degree. ठीक है जी, this is 90 degree. अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 किसके बराबर होता है? दैट इज 0. तो ये टर्म 0 बनेगी. दिस विल बी इक्वल टू 0. सो वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तभी मैंने यहां पे लिखा कि रिजल्टेंट जो है इन दो वेक्टर्स का वो होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. देन देयर आर 3 more special cases and they are very very important. Every now and then they are repeated. Every now and then they are repeated. ठीक है जी. एक स्पेशल केस हमारे पास ये है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं. We have two vectors like this, but the magnitude of both the vectors is same. This is b which is equal to a. मतलब ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है. इनके दरमियान एंगल है 60 डिग्री. किसके बराबर? 60. Now since the magnitude of the two vectors same, so the resultant will be along the angle bisector. और इस resultant का magnitude क्या होगा? That will be equal to, just memorize this important result, root 3e. It's very very important. root 3e. Next is that अगर हमारे पास दो vectors हैं, if we have two vectors which are mutually perpendicular like this. This one vector that is a, this another vector which is b is equal to a. इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है दैट्स अलोंग द एंगल बाइसेक्टर अगेन, एंड दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू, याद रख लो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रूट 2a. इट इज इक्वल टू व्हाट? रूट 2a. अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है जी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ओके. एंड वन मोर हियर वी हैव, एक और रिजल्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज if we have two vectors, one is a vector and another vector is b vector, like this it is, this is b which is equal to a, and the angle between the two vectors is 120 degree. 120 degree. Then the resultant of these two vectors will again lie along the angle bisector, और इन दो का रिजल्टेंट होगा किसके बराबर? इट विल बी इक्वल टू a. ठीक है. सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. ठीक है बेटा. इज दिस क्लियर और नॉट? okay, so these are our important very very important results. okay, absolutely clear. ठीक है ना. लेट मी समराइज दीज 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. तो एक रिजल्ट हमने ये लिखा, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो आर विल बी किसके बराबर होगा? आर ए प्लस बी. नंबर नेक्स्ट इज दैट अगर थीटा होगा, इफ द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स दे आर द अपोजिट डायरेक्शन, आर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी. नंबर थर्ड इज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इन दिस वेरी केस आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square. Number 4 is that a is equal to b and theta is equal to 60 degree. Number 5, a is equal to b and theta is equal to 90 degree. Number 6, a is equal to b and theta is equal to 120 degree. So the resultant is, in these 3 special cases, will be root 3 into a or root 2 multiplied by a, or will be equal to a. okay, so these are very very important results. ठीक है. तो ये results जब भी हम vectors पढ़ेंगे, so these results will be used somewhere. So they are
एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो ये रिजल्ट्स कम से कम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टॉप हियर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, यही से हम स्टार्ट करेंगे जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।